Hi everyone, welcome to the third episode of Deep Dive Case Studies. And आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट. तो डू यू नो कि इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर स्टोरीज अराउंड द प्लानट. एंड लास्ट ईयर 2024 तक this market was already worth tens of billions of dollars, and analysts still expect it to multiply by several times by the end of this decade. यानी कि by the time you and I we enter 2030 or 2035, ये जो फूड डिलीवरी मार्केट है दिस विल टच और क्रॉस $50 बिलियन का बेंचमार्क. नाउ इन दिस टेक ड्रिवन बिलियन डॉलर मार्केट को कंज्यूम या डोमिनेट करने की रेस में 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं. वन इज़ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, की द एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन टू ईच इंडिविजुअल एट द बॉटम लेवल एज वेल. सेकेंड इज़ अर्बनाइजेशन, you know, the kind of internet access, the kind of facilities we have, urbanization we all know. Third and the most important factor is convenience culture. तो ये इतनी टेक्नोलॉजी, इतने स्मार्टफोन्स, इतना ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस मिलने के बाद जो हमें घर बैठे बैठे चीज़ें मंगाने की आदत पड़ गई है, these 3 factors will play an important role and would eventually make this market explode. अब the most important thing that we are going to cover is इस बिलियन डॉलर टेक रेस के बीच में जो ऑलरेडी डोमिनेटेड है बाय टेक जाइंट्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो, एक 130 साल पुराना ऐसा फूड डिलीवरी मॉडल जिसमें कोई टेक्नोलॉजी, कोई जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, कोई एआई भी इस्तेमाल नहीं होता है, एग्जिस्ट करता है राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई. येस, इफ़ यू आर अवेयर, तो आई एम स्पीकिंग अबाउट मुंबई के डब्बे वालों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. तो मुंबई डब्बावाला ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ 130-year-old ऑर्गेनाइजेशन दैट डिलीवर होम कुक्ड फूड फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस विद नियर परफेक्ट एक्यूरेसी. ये लोग दिन के 2 लाख टिफिन्स डिलीवर करते हैं. नाउ there is an estimate of 5,000 Dabbawalas working in this organization that eventually joined with time. Starting में number बहुत low था, but eventually out of these 5,000 Dabbawalas who are working in this organization, 90% of them are not tech savvy. They even don't know how to use smartphones. Still, they are able to deliver 2 lakh tiffins around the city on a daily basis, and from your home to your office and vice versa. After you complete your lunch, they deliver the empty box back to your home. So how are they actually doing it? And what is the survival rate of these people in this tech driven market without the use of any technology? Now this is the thing that I'm going to cover today. So first thing first, let's know कि ये डब्बावाला ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई कैसे. So the story goes back 130 years back in 1890, जब मुंबई में बैठे एक पारसी बैंकर को अपने ऑफिस में चाह उठी घर का खाना खाने की. अगेन, इट इज़ नथिंग अनयूजुअल, घर का खाना किसे नहीं पसंद. देन ए मैन नेम्ड महादेव हवाजी बच्चे केम इनटू द पिक्चर एंड ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. तो महादेव हवाजी बच्चे ने क्या किया, ही कलेक्टेड अ फ्यू मेन एंड ही स्टार्टेड picking up tiffins from your home and delivering them to your workplace. So what started as a handful of men delivering tiffins eventually turned into a massive network of customers. Starting में they had very few customers, but eventually this idea is very crazy कि घर से आपका टिफिन पिक हो रहा है और आपके ऑफिस में जा रहा है and you are able to eat home cooked घर का खाना, right? So it eventually turned into a massive network of customers. Today the Dabbawala organization has 5,000 workers and is a registered charity-like organization with 5,000 people working as an equal partner. पिछले 130 सालों से इनका ये जो टिफिन डिलीवरी सिस्टम है is they are catering it and delivering it like a tradition and passing it down generations. So this is how Dabbawala organization started 130 years ago. Now moving to the operations of these Dabbawalas. So I'll tell you, Dabbawalas do not use any technology because, as I told, majority of them are semi-literate and not at all tech savvy. They do not know how to use smartphones or how to use technology, right? So what they do is हर टिफिन के ऊपर एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है.
So I'll show some pictures, right? Each tiffin has a color code and some numbers. So these numbers basically represent the suburbs जहाँ से टिफिन पिक होना है. Then सुबह सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे they all pick the tiffins from the homes. The tiffins are then brought to a sorting point where the tiffins are basically sorted based on the numbers and the destination, the color code. The color code may represent the station कि डब्बों को कौन से स्टेशन पे ले जाना है और कौन सी लाइन में ये ट्रैवल करेंगे. जस्ट लाइक इन दिल्ली वी हैव ब्लू लाइन, येलो लाइन मेट्रोज, राइट? सो similarly, the number represents the suburbs where the tiffin needs to be picked from. The color code represents the station where it needs to be dropped. In between, all the tiffins are brought together and they are sorted based on the station they needed to be dropped. Again, अभी डब्बे स्टेशन तक, all of this is not being done on any scooties or any cars. This is done with carts or on cycles. No urbanization here, right? अब ये जब स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन के थ्रू दिस टिफिन्स ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन स्टेशन. अगेन एट द डेस्टिनेशन स्टेशन द डब्बास आर अगेन सॉर्टेड आउट based on the building and the floor they need to be delivered. This is how a massive network of 5,000 Dabbawalas pick the dabba from your home just on the basis of color code and the number that is mentioned in the dabba. They take it to a sorting point, they sort out the dabbas, deliver it through the local trains to the destination station, again sort them out on the basis of the numbers and the buildings they need to be delivered, and they deliver it to the floor. The reverse process is again done. All the tiffins are delivered somewhere between 1:30 to 2 p.m. before your lunch. After lunch 3 बजे सेम प्रोसेस रिवर्स में स्टार्ट होता है. रिस्पेक्टिव ऑफिसेज एंड फ्लोर से डब्बे कलेक्ट होते हैं, वो सॉर्टिंग पॉइंट पर लाए जाते हैं, सॉर्ट आउट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द नंबर एंड द कलर सिस्टम to the respective railway station, and then they are sent back home. So this is how the Dabbawala organization actually operates without using any technology, and they have been operating like this for the past 130 years. The most fascinating part about the Dabbawala story is that पिछले 130 सालों में they have never used any technology, any GPS tracking system or any apps to complete or cover their operations. Dabbawala solely rely on teamwork, discipline and cities train network. तो अब मुंबई में जितनी भी लोकल ट्रेन है they strictly run on a fixed schedule, and डब्बावालास का रोल इन ट्रेन की टाइमिंग से completely synced है. एक डब्बे वाले को उसका रोल अच्छे से पता है, एंड वंस दे इंटर वर्क, their work life is their second personality. Due to this sheer dedication, teamwork and the synchronization between each dabbawala, they have achieved a 6 sigma level accuracy. 6 sigma level accuracy means the entire organization of 5,000 people makes less than one mistake in 6 million deliveries. Now imagine 5,000 लोग collaboratively without any technology are working at such a fine synchronization कि आप 6 मिलियन डिलीवरीज में सिर्फ एक गलती या कर रहे हो या वो भी नहीं कर रहे हो, एंड दे डिलीवर 2 लाख टिफिन्स पर डे. दैट मीन्स पूरे महीने में एक भी टिफिन आपका मिसप्लेस नहीं हो रहा है. दिस इज द काइंड ऑफ टीम वर्क and operations they carry out on a daily basis just on the basis of a color code and a number system that is printed on each particular dabba. This level of accuracy has made a lot of big companies like FedEx, DHL and even organizations like Harvard study the Dabbawala and see how they are able to operate. Dabbawala organization की जो story है, it is already being taught in Harvard as a case study, and FedEx DHL ने भी इनकी case studies को समझा है, जाना है, and based on that they have tried to enhance their operations. So this is basically all about the Dabbawalas, how they started, how they run their daily operations, the kind of revenue they generate, and still from the past 130 years the customers जिनके टिफिन से डिलीवर करते हैं, they still trust the Dabbawalas more than Swiggy and Zomato, so they do not place an order. Instead, they get their tiffins delivered from their home.
This was all, and there are a lot of great learnings from this episode. Now, instead of me sharing the learnings, I would want you all to comment down what all did you learn from this case study. I'll see you in the next video. Till then, have a nice day.